राहों में आकर हम तो जमाना भूल गए। हाँ तो सनम तेरी बाहों में आकर, हाँ तो सनम तेरी बाहों में आकर होश में आना भूल गए। तेरी कसम तेरी राहों में आकर हम तो जमाना भूल गए। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। मन में प्यार भरा और तन में प्यार भरा, जीवन में प्यार भरा, तुम तो मेरे प्रियवर हो, तुम ही तो मेरे प्रियवर हो। मासूम चेहरे की क्या बात यार, मासूम चेहरे की क्या बात यार, हमको तो होने लगा है प्यार, हमको तो होने लगा है प्यार। चारों तरफ है छाया खुमार, चारों तरफ है छाया खुमार, हमको तो होने लगा है प्यार, हमको तो होने लगा है प्यार। मुझे नींद न आए, नींद न आए, नींद न आए, मुझे चैन न आए, चैन न आए, चैन न आए। मुझे नींद न आए हो, मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए। न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया। मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए। न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया। सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। जाम की जरूरत है जैसे, जाम की जरूरत है जैसे, बेखुदी के लिए हाँ एक सनम चाहिए
प्यार तो हुआ रे ओ दिलरुबा, तूने दिल ले लिया रे हो। तेरे से हुआ पर प्यार तो हुआ रे ओ दिलरुबा, तूने दिल ले लिया रे हो। दोस्ती से मिला है मुझे एक तोहफा प्यार का, तेरी दोस्ती से मिला है मुझे एक तोहफा प्यार का। है बदनसीबी हमारी सनम, न मिल सका प्यार आपका। तेरी दोस्ती से मिला है मुझे एक तोहफा प्यार का। है बदनसीबी हमारी सनम, न मिल सका प्यार आपका। तेरी दोस्ती से मिला है मुझे एक तोहफा प्यार का। तेरी दोस्ती से मिला है मुझे एक तोहफा प्यार का। जब से मिले नैना, तुमसे मिले नैना, तड़प तड़प दिन बीते और जागी जागी रहना। जब से मिले नैना, तुमसे मिले नैना, तड़प तड़प दिन बीते और जागी जागी रहना। तेरी इसी अदा पे सनम मुझको तो प्यार आया हो। तेरी इसी अदा पे सनम मुझको तो प्यार आया। गले से तूने लगाया, गले से मेरे दिल को करार आया हो। तेरी इसी अदा पे सनम मुझको तो प्यार आया। मैं एक चोर तू मेरी रानी, मैं एक चोर तू मेरी रानी, चोरी चोरी ले चला मैं तुमको तुमसे ही चुरा के। मैं एक चोर तू मेरी रानी, मैं एक चोर। चोर नहीं, तू मेरा राजा, मैं तेरी रानी, तू मेरा राजा, मैं तेरी रानी। चल पड़ी मैं साथ तेरे, सारी दुनिया को भुला के। तू मेरा राजा, मैं तेरी रानी, तू मेरा राजा। प्यार के बदले प्यार मिलेगा, दिल के बदले दिलदार मिलेगा। प्यार के बदले प्यार मिलेगा, दिल के बदले दिलदार मिलेगा। मेरी किस्मत में क्या है रब्बा, मेरी किस्मत में क्या लिखा रब्बा, ना जाने कैसा यार मिलेगा। प्यार के बदले प्यार मिलेगा, दिल के बदले दिलदार मिलेगा। प्यार के बदले प्यार मिलेगा, दिल के बदले दिलदार मिलेगा। ना जाने क्या हो गया है तुम्हें देख कर, तुम्हें देख कर, तुम्हें देख कर।
कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, कितनी प्यारी आँखें हैं, आँखों से छलकता प्यार। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। हो, 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 सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। बरसों के बाद आई मुझको याद एक बात, बरसों के बाद आई मुझको याद एक बात। तेरे बिन नहीं गुजरे दिन, तेरे बिन नहीं गुजरे रात, तेरे बिन नहीं गुजरे दिन, तेरे बिन नहीं गुजरे रात। बिना तुम्हारे चार कदम भी चला नहीं जाए, बिना तुम्हारे आंखों से कुछ नजर नहीं आए, बिना तुम्हारे कुछ भी हमसे किया नहीं जाए, एक पल हमसे बिना तुम्हारे जिया नहीं जाए, जिया नहीं जाए, जिया नहीं जाए, जिया नहीं जाए, जिया नहीं जाए। बिना तुम्हारे चार कदम भी चला नहीं जाए, बिना तुम्हारे आँखों से कुछ नजर नहीं आए। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। तुम्हें पाकर जमाने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। मेरा दिल तेरे लिए धड़कता देखूं जो तुझे तो ये दिल बहकता है, हो
मुझे तुम याद आते हो। जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से छुपके, जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से छुपके, जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से छुपके। तुमने ऐसी बात कही दिल मेरा खो गया, न जाने कब प्यार हो गया सनम इकरार हो गया, न जाने कब प्यार हो गया सनम इकरार हो गया। बरसात होने दे, बरसात हो रही है, बरसात होने दे, जो अब तक हुई ना वही बात होने दे। बरसात हो रही है, बरसात होने दे, बरसात हो रही है, बरसात होने दे। सनम चले आए, तू न आया तो हम चले आए। तेरे दर पर सनम चले आए, तू न आया तो हम चले आए, चले आए, चले आए। तेरे दर पर सनम चले आए, तू न आया तो हम चले आए। इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा। तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा। तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा। आने वाला कल एक सपना है, गुजरा हुआ कल बस अपना है। आने वाला कल एक सपना है, गुजरा हुआ कल बस अपना है। हम
गुजरे कल में रहते हैं, यादों के सब जुगनू जंगल में रहते हैं, यादों के सब जुगनू जंगल में रहते हैं। आने वाला कल एक सपना है, गुजरा हुआ कल बस अपना है। हम गुजरे कल में रहते हैं, यादों के सब जुगनू जंगल में रहते हैं, यादों के सब जुगनू जंगल में रहते हैं। दिल दीवाना ना जाने कब खो गया, तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया। दिल दीवाना ना जाने कब खो गया, तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया। कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया मेरी जान। दिल दीवाना ना जाने कब खो गया, तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया। जाने जिगर जाने मन, मुझको है तेरी कसम, तू जो मुझे ना मिला मर जाऊंगी मैं सनम। जाने जिगर जाने मन, मुझको है तेरी कसम, तू जो मुझे ना मिली मर जाऊंगा मैं सनम। रोकेगा हमको अब क्या ज़माना, मर के हमें वादा निभाना। जाने जिगर जाने मन, मुझको है तेरी कसम, तू जो मुझे ना मिला मर जाऊंगी मैं सनम। ऐ काश के हम होश में अब आने ना पाए, ऐ काश के हम होश में अब आने ना पाए। बस नगमे तेरे प्यार के गाते ही जाए, ऐ काश के हम होश में अब आने ना पाए, ऐ काश के हम होश में अब आने ना पाए। जीना लगे बिन तेरे यारा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। जीना लगे बिन तेरे यारा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। कैसे बताऊं तुझको, मुझको तो इश्क ने मारा, मैं क्या करूं। जीना लगे बिन तेरे यारा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो हैं तैयार हम, हैं तैयार हम। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार
की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है जब तक ना मिले नजरों से नजर जब तक ना मिले नजरों से नजर इकरार अधूरा रहता है घूंघट की आड़ से दिलबर का 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 दीवानी दीवानी दीवाना तेरा हो गया दीवानी दीवानी दीवाना तेरा हो गया जब से तू दिल में समाई जब से तू दिल में समाई दीवानी 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 तेरी हो गई आई तेरी बाहों में आई तेरी बाहों में आई Wagwan, my youth. I dare my youth, what's up? I there, man. Okay. What I want to know is why you slept in this morning. I did not slept in. Okay. I was conducting business. Okay. I Yeah. see. Yeah. I see. I'm man, I got time for sleeping. I'm all about making money. Okay. This is 2022. All broke men got to stay be hang. So I ain't Forgot staying. about that. I ain't staying be hang. Totally forgot about I that. passed at the schools and seen the long lines of For the cash grant. I think the the cash cash grant vouchers are being issued today. yeah, it started yesterday. Started yesterday. Right, right. So Of course, you can tell because you're seeing all the memes on social media. I hope I don't see those pair of mothers, especially in the salon. I know, right? I hope I see you at And get their nails done Yeah. and hair done. I'm hoping to and see in the you. clubs. I'm hoping to see you at Gandhi's and Austin's bookstore and those places. I was actually thinking about something, but I guess it would be very difficult to do that way. What is that? Like for example, in the US, what I know, right? Okay, I'm talking about like food stamps here, right? So what happened is like the kids, they would get like this card that is loaded with like $200, $500 inside. But if you go anywhere to shop, you can only buy items that they know the kid would need. So you can't go and buy alcohol with that card, right? You can't go and buy toilet paper. You can only buy things like School milk, stuff. vegetables, school supplies. So I was thinking, I was just wondering that, maybe the cash voucher should only be redeemable at certain places. You know, they where- did that. Years did ago, that? they had a school voucher. I remember which the was school redeemable voucher, right? at only a set of stationery stores. Right, you right, know, right. and So this uniform cash places. voucher is just like general. It's cash. It's 30,000 cash. Oh, that's gonna be a little troublesome. I honestly could have sworn that it was like a check or something. No, you just go and you go to the envelopes. You go there, you go to your ID card, identify that you are the that's a parent, little troublesome for me. and then you're the parent, and they give you an envelope. And it's up to you if you want to open the envelope to see if it's $30,000. And present to witness that is an auditor from the Auditor General's Oh, office. so you can do that too? You can open the count envelope and it? count it. Yeah, if you wish. Yeah. Okay. But the Auditor General staff is the audit office staff rather. They are there to verify. Point. I guess they're Okay. just monitoring it for transparency's Okay, sake. I understand. All right, cool. But I still think that should not have been cash. Yeah, I still believe that should have been redeemable at certain supermarkets, at certain Yeah. stationery stores. That's true. At places like, like Gandhi's and these type of business that you'd buy like Yeah. deodorants and those kind of things for children and stationery supplies and Well, maybe- cloth and all these things, books Well, and so on. I mean, I don't think they'll spend 30,000 one place. So maybe that's why they put two and two together. I'm not gonna spend $30,000 at Gandhi's. I'm gonna spend. That's why it 30,000. should have been like 5. No, it should have been like it should. I don't know. I think it should have been different.
Because I think it's going to be very problematic, especially for those parents who have several children. memes on and they're Facebook. collecting all that money. We really don't know how the money and if it's going towards the children. I mean, I trust that the parents will do the right thing, but I still think that the system could have been different. Yeah, but it's there. What are you I gonna don't do? know. I agree with you, but I see where you're coming from. But I still feel the children is not going to get the full benefit of that money. Knowing some parents, you want us to do a survey? when you pass back and see a brand new coat of paint up in the house, an extension mech, you can't. You feel Guyanese people easy? Guyanese people ain't easy. That's true. Listen, I can Parents- only hope. I can only reach out to the Exactly. parents Uh-huh. and take the money and put it towards your children's education. That's what it's for. Ensure Agreed. that they get proper clothing, proper footwear, they get umbrellas, they get raincoats, they get their textbooks. Uh-huh. Their lessons or whatever are catered for, are paid for. Mm-hmm. They get good proper food to eat. Ensure that these things. This is what they're using the money for. I agree with you wholeheartedly, Buddy Pal. But also, it's also good to mention that the private schools are benefiting from this as well. So both government and private schools are benefiting. Children that are benefiting from this $30,000 because we care cash grant. Yeah. So it started yesterday. It continues today. So let's see what happens. Yeah. All right. We can only hope for the best. We can only hope for the best. Yes. Sadly, the three of us in studio here, Kevin, you, and myself, have no kids. have no kids, and we cannot go and collect. All right. So it is a Wednesday. I can't believe I'm saying this. It is Wednesday already, Buddy Pal. It is. Time It is really Wednesday, flies. the 3rd of August. I'm 26 days away from my birthday. You're counting. Yes. You're 26 days. I'm going to do a countdown like if we're counting down to Christmas. You're 26 days away from officially coming off the almanac. I don't know what you're talking about. You know what I'm talking about. Look at me. I've got the face of an 18-year-old. Let me see if Guyanese people understand. Drop us in a comment what you mean. What do you think? Shut up. Wait a minute. What do you, No, don't do that. let us know. No, we're not doing your age. Drop us in a comment. What comes to mind rather when you hear someone say you're coming off the almanac? I or mean, coming is that off really the calendar? rocket science? Yeah, some people. I told a taxi man that he couldn't understand what I was saying. It just means that you're over 31. That's all it means. Why Y'all are don't you bust your head spoiling? too Why are much. you spoiling the fun? Because we are putting people for do. So are you publicly coming out? I did not say that To I say was that over 31. you I are said that's what it officially- means. You see somebody's wishing you happy pre-birthday. Thank you, Bodnad Basdio. But not Basdio. You don't wish happy birthday. You give gifts. I'm fine with the happy birthday. But I know he's not going to be okay with that. Drop her a there is this place at a big fancy hotel that sells wine. Bring her some from there. All right. Oh, it's 9 hours 40. The time just definitely flying this morning. Good morning to you guys. 31. Jenny Mojavier. Yes. Her 32nd birthday is coming up in August. I have no idea what he's talking about. While his 46th will be celebrated on October 2nd. Well, All right. I am happy. I'm off the almanac. Unlike you, that isn't. I'm not. He's in Lethem. Nice. Lethem has those fat sausage. What do you call him, Buddy Pal? Huh? What do you call those fat sausage that comes from Lethem? Calabresa. I love it. Calabresa. Yes. So you ready to see what we have in the world of horoscope? Yes. Where is I know that today for sure I'm having a bad day. you having a bad day? Yes. Well, I can tell with the phone conversation you had. I Yeah. don't even have to ask. You don't have to ask who it is. I don't even have who it is. The attitude that you give that person, if you could have slapped that person through the phone, you would have. So Virgo, you'll find yourself working well with any group today, Virgo. There will be a great connection between you and the people around you. Make sure you ground your relationships. Okay. All right. Well, just yesterday, someone said that we should share an office because we blend very well. We blend very well. That's true. Whoever I'm around, we try to have a healthy relationship. I could remember, right? I'll tell you something. And it goes to show why a change in your mindset is important. So you're finished with my horoscope? Yes, I'm finished with your We'll go horoscope. to yours just now. Sure, no problem. When I was much younger, and this is why I'm gonna say this today because I'm speaking from a place of experience. Mm-hmm. When I was in my teens, I was 13, 14, about there. I wouldn't say the latest, maybe 16, right? Because after that, I became very wise. Yeah.
with the friends and the people that you're with, your acquaintances, the people that the environment you're in. Yeah. Like when I was much younger, like when you go to a place, you go to an event, somebody wedding, somebody birthday party, family gathering, whatever. You go in there and you see your cousins and you don't talk to them. They screw up their face, you screw up yours. And during the whole time that you're there, y'all basically giving each other the eyes. And you're saying things and throwing talks and, like scornful, nasty behavior. Right? And that was me when I was younger. That was me at 11. Not 11, like about 13, 14 in the height of my teens there. Because guess what? I didn't know any better. Right? And then as you grow older, you realize the importance of not being friends per se, the importance of treating everyone with respect. With respect, yeah. Right? And as I finished school, I went to the Swami school. I saw life differently. I grooved in. I went to the Swami school at the age of 13, I believe. Right? And so since then, I had a change it took me some time to groove in because I was coming from a public school system. Into right? private, yeah. Into not just a private, but a very different atmosphere where they do not tolerate that. Right? So it took some time for me to basically change my mindset. And then at 15, 16, 17 onwards, you understand the importance of respecting people. Correct. You understand the importance of not making enmity with the people who are around you because those are the people around you. Yeah. Those are the people who you may not share the same mindset. You may not have the same principles, the same ideals. You may not see eye to eye, but it's important to agree to disagree. Yeah. It's important to understand that to each his own. Yeah. It's important to share the same space. You may have different ideologies, but you must learn how to share the same space. I totally agree with you. And that's why I wanted to mention that this morning. And that's why it's important to you as teenagers, as adults. There's some adults who are worse than that. Correct. And for parents and so on, that's why it's important to be cognizant of the environment that you're growing your child in. Agreed. Right? And it's important for them to have this change in mindset. It's important for you to teach your children respect. It's important for you to teach them morals. These things are important. Yeah. Right? So it's good that you mentioned that this morning. And then what Miss Sharon said yesterday. And I just remembered, how I was when I was younger and how I am now. Everybody must learn to coexist in the same space. And you must learn to do so in a manner that doesn't affect you or the other person. Totally agree with you. Yeah. So for those persons who are, like bothersome, troublesome neighbors and people who always, like for example, I'll say this publicly and my sister's probably listening. 2 nights in a row, I went to my sister's home to drop my nephew off at about 7:30. One night I went about 8 o'clock. Right? And both nights I went in a row, her husband was playing music, and he has the big music system on the outside of the house. Oh, boy. Right? It's under the shed, but it's fixated right there. And I went at 8:30 in the night. It was about 8 o'clock in the night, and the music was on very loudly. And I said, why does he continue to play the music so loudly every night at this time? She said he just started. I said he just started, and now it's 8 o'clock in the night. Don't you think people have to work in the morning? Why are you playing the music this loud at that time in the night? Right? She's my sister, and I will tell her as it is, because that is not right. At that time in the night, people have kids. They got to go to school the next morning. Some people got to get up at 4 o'clock in the morning to start cooking. At 8 o'clock in the night, they're already in their beds, or they're preparing to go to their beds. You cannot be playing. Nobody's stopping you from playing the music, but you cannot be a nuisance to your neighbors. You cannot be playing the music that loudly, whether they're enjoying it or not. It's not right. You had all day to do that. Not because you now come home and you now eat your dinner, you feel like listening to music at 100 decibels, you're putting it up that high. I'm not okay with that. Right? And if I were her neighbor, I would make an issue about it. Right? So, to those people who do those kinds of things, this is why you will continuously have problems. You'll continuously have neighbors who call in the police on you, and you're going to continue to throw up a tantrum because people just don't take into consideration other people. That is so right? true. So I just wanted to bring that out this morning, that you guys, if you want to coexist and you want to live in peace and you want to be able to live comfortably with the people around you, you have to learn how to be mindful of other people. Right? So that is a lot that's coming from my horoscope this morning. Let's go over to Body Pal's horoscope. So my horoscope today says there's an incredibly expansive feeling in the air that you should latch on to, Libra.
things are moving rapidly. Mm-hmm. You will find long-term trends come together quite well. Don't know how to. What long-term trends are you talking I about? don't know. I don't know how to interpret that this morning. Uh-huh. It's kind of tricky. Your horoscope kind of puts you in that thinking mode. Well, I think that's the whole idea. You see what happened? Your horoscope doesn't tell you today you're finding $5, you know. Your horoscope just tell you things that you gotta figure out. You gotta- It's like your dreams. Yes. By the way, last night I had the weirdest dream. I don't know what's happening with me in my dreams recently. I had some kind of dream last night. So this is what I actually dreamt of betrayal last night. And I dreamt a popular minister. So I dream that we were in this place, right? And it's me and two of my best friends, right? And we're filling out. So it's some kind of workshop, it's a job, or some kind of setting like that. And it's a minister. And it's a she. She's responsible for the workshop or work or whatever it is. And then my two friends, one of them coming to me and she chummying up to me, and oh Sari, I love you. We got this. We can work together, and all kind of story. Anyway. I don't know how come minister and I happen to be alone at some point, right? Or whether she called to talk to me or we happen to end up alone. And she said to me, she says, do not trust your friends. She says, because do you know that the same friend that you have working with you in the group, it's the same friend who submitted a medical report about you that you are medically unfit for this job? Oh my goodness. Yeah, gracious me. and it's some kind of, first of all, I don't know how they got a medical report on me because I did not do any medical tests, right? But dreams don't really make sense. Yeah. But she said, and she submitted this report about you, and she listed all of your illnesses and all of your blood report and blah blah blah. So be careful of your friends. So that was a dream that was quite an eye opener this morning, because it just serves as a reminder to be very careful who you have around you. And even if you're being careful, the people who you have around you will know that you're being careful, and you will know that once they're around you that they're chosen, and those are the same ones who will disappoint you. So my thing to you this morning is, you don't have to not be friends with people. You just have to be mindful what information you let people know. I like that. Yeah. So our guy Alex, he's a Cancer. And I said, what seems like the perfect plan today may not necessarily seem like the perfect plan tomorrow, Cancer. So you gotta do what you gotta do today. You gotta do what you gotta do today, bro. Which is $5,000 each. We want lunch. Yes. Nothing big. There's nothing big. Small things for you, man. Small flies. A man I get $500,000 in the pocket one time. Man got money. Man got money. For the morning, man coming from a money session. Yeah. I hear there was pelted with money in I the hear place. it too, man. I hear we share money pull up. We're going to another place. So we're getting lunch today? We getting lunch? We getting 2 things to drink, 2 coconut water. Yeah? All right, here I'm going to have this microphone and we go to the music. I'm making the reservations now. Guys, stay with us. We'll be right back. All right, the news comes up in just about 10 minutes.
समझ लो सारे जहां में तुमसे हुआ है। ओ लाखों मिले कोई भी ना तुम सा मिला। ओ मेरा ये दिल तेरी ओर चलता गया ना रुका। मेरे यारा मान जाना मेरे यारा। आके मुझे थाम ले तू भी मेरा नाम ले। मेरे यारा मेरे यारा मान जाना मेरे यारा। बातें जरूरी है तेरा मिलना भी जरूरी। मैंने मिटा देनी ये जो तेरी मेरी दूरी। बातें जरूरी है तेरा मिलना भी जरूरी। मैंने मिटा देनी ये जो तेरी मेरी दूरी। झूठी है बुराई सारी दुनिया की इश्क जहां ना चले। तेरा होना मेरा होना क्या होना अगर ना दोनों मिले। तू पहला पहला प्यार है मेरा। 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 सुनो ना कहे क्या सुनो ना दिल मेरा सुनो ना सुन लो जरा तेरी बाहों में मुझे रहना है रात भर। तेरी बाहों में होगी सुबह। बेइंतहा बेइंतहा यूं प्यार कर बेइंतहा देखा करूं सारी उम्र तेरे निशान। बेइंतहा कोई कसर ना रहे मेरी खबर ना रहे। झूले मुझे इस कदर बेइंतहा। जब सांसों में तेरी सांसें घुली तो फिर सुलगने लगे एहसास मेरे मुझसे कहने लगे। हाँ बाहों में तेरी आके जहाँ दो यूं सिमटने लगे। सैलाब जैसे कोई बहने लगे। खोया हूँ मैं आगोश में तू भी कहाँ अब होश में। मखमली रात की होना सुबह बेइंतहा बेइंतहा यूं
प्यार कर बेइंतहा। तुझ पे मेरी है दावेदारियां, तुझसे है दिल की साझेदारियां। तुझ पे मेरी है दावेदारियां, तुझसे है दिल की साझेदारियां। तेरे बिन सांसें लूं तो जी ना सकूं, अब तू ही बता क्या मैं करूं, क्या करूं, क्या करूं। Girl I need you, girl I need you, girl I need you, never leave you. Girl I need you, girl I need you, girl I need you, never leave you. सुबह से शाम तक लम्हे बाहों में तेरी गुजारूं, चेहरा तेरा सामने रख के इस दिल में आज उतारूं। हो हो जुदा हम हो गए माना, मगर ये जान लो जाना। जुदा हम हो गए माना, मगर ये जान लो जाना। कभी मैं याद आऊं तो चले आना, चले आना। तुम्हें मैं भूल जाऊंगा, ये बातें दिल में ना लाना। कभी मैं याद आऊं तो चले आना, चले आना। था कौन मेरा एक तू ही था, सांसों से ज्यादा जो जरूरी था। तेरे लिए मैं कुछ नहीं, लेकिन मेरे लिए तू मेरा सब कुछ था। नहीं जाना भुला करके ये बातें तुम ही कहते थे। रही खुशियाँ नहीं मेरी कि तुम भी वक्त जैसे थे। तुम्हारा था रहेगा भी, करे क्या दिल है दीवाना। कभी मैं याद आऊं तो चले आना, चले आना। दुआ भी लगे ना मुझे, दवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे तू लगा है। नींद रातों की मेरी, चाहत बातों की मेरी, चैन को भी मेरे तूने यूं ठगा है। जब सांसें भरूं मैं बंद, आंखें करूं मैं नजर, तू याद आया। दिल को करार आया, तुझ पे प्यार आया। पहली पहली बार आया ओ यारा। दिल को करार आया, तुझ पे प्यार आया। पहली पहली बार आया ओ यारा। हर रोज पूछे ये हवाएं, हम तो बता के हारे। क्यों जिक्र तेरा करते हैं हम सितारे। हर रोज
This is the news on top of the hour. Live from our studio in Georgetown. Kaiser Radio, 99.1 FM. I'm Kevin Smith with your news in capsule. Emboldened by the permission of the Guyana government for an offshore pumping spree, ExxonMobil and its partners have kicked off procurement and engineering works for the fifth oil project in the Stabroek Block. Making this disclosure was Hess Corporation during its second quarter earnings call for the end of July 2022. Hess and its partners are also simultaneously planning a drilling campaign with 24 wells evenly distributed across its Kanji and Kaitro blocks. It will also execute a 35-well program in the Stabroek Block next year. And also happening, after 2 years in office, government still to make new law to protect Guyana's oil resources. According to Article 13, coalition government tied Guyana to $1.9 billion 10-year rental for UN offices, some equivalent to almost 7% increases for public servants. Former EPA head says impossible to trust ExxonMobil's claim of adhering to flaring levels as oil giant hides data on Liza 1 project. UK firm gets contract for gas-to-energy project without EPA permit. New CJIA admin building estimated to cost almost $1 billion. 8 contractors vying for project. And Exxon to push oil production spree in Guyana. US to net more record-breaking profits. And that's the news of the moment. Remember to get the full details of these stories, pick up a copy of the Kaiser News. And don't forget, you can catch us on the MyTuner app as well as the Radio Garden app. You can also keep up to date by liking our Facebook page at Kaiser Radio and subscribing to our YouTube channel, Kaiser Radio Livestream. Oh, also catch our stream at www.kaisernewsonline.com/radio. आशिक
कहीं तुझको साया भी तेरा ना मैं दूं, रख लूं बना के कहीं घर मैं तुझे, साथ तेरे मैं ही रहूं, जुल्फ़े तेरी इतनी घनी देख के इनको ये सोचता हूँ, साए में इनके मैं जीऊं। कुछ तो है जो नींद आए कम, कुछ तो है जो आंखें हैं नम, कुछ तो है जो तू कह दे तो हंसते हंसते मर जाए हम। मुझसे ज्यादा मेरे जैसा कोई है तो है तू। तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा, तू ही मेरा रब है, जहां है तू ही मेरी दुनिया। तू वक्त मेरे लिए, मैं हूँ तेरा लम्हा, कैसे रहेगा भला होके तू मुझसे जुदा। तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा, तू ही मेरा रब है, जहां है तू ही मेरी दुनिया। तू वक्त मेरे लिए, मैं हूँ तेरा लम्हा, कैसे रहेगा भला होके तुम मुझसे जुदा। दिल को दुआ कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए, अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे नारे भरा कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ममता के मंदिर की है तू
सबसे प्यारी मूरत, ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत, जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए। जन्मों की दीवारों पर हम प्यार अपना लिख जाए, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। जिसे था टूट के चाहा उसी ने दिल मेरा तोड़ा। मेरे हमराह ने मुझको है तन्हा राह में छोड़ा। छुपा के सारी दुनिया से अश्क अपने बहाता हूँ। उन्हें कैसे बताऊं मैं ना उनको भूल पाता हूँ। आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। जिंदगी खफा खफा और तुम दिल लगाने की बात करते हो। मेरे दिल में जो रहते थे हुए हैं आज बेगाने। मेरे दिल में जो रहते थे हुए हैं आज बेगाने। नजर मेरी मोहब्बत को लगी किसकी खुदा जाने। है रास्ते धुआं धुआं और तुम पास आने की बात करते हो। आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। बेतहाशा दिल ने तुझको ही चाहा है, हर दुआ में मैंने तुझको ही मांगा है। तेरा जाना जैसे कोई बद्दुआ, तेरा जाना जैसे कोई बद्दुआ। दूर जाओगे जो तुम मर जाएंगे हम, सनम तेरी कसम ओ सनम तेरी कसम ओ सनम तेरी कसम। तुम्हें देखते ही आंखें हो जाती नम, सनम तेरी कसम ओ सनम तेरी कसम ओ सनम तेरी कसम। हालत क्या है कैसे तुझे बताऊं मैं, करवट बदल बदल के रात बिताऊं मैं। हालत क्या है कैसे तुझे बताऊं मैं, करवट बदल बदल के रात बिताऊं मैं। पूछो जरा पूछो क्या हाल है, हाल मेरा बेहाल है। पूछो जरा पूछो क्या हाल है, हाल मेरा बेहाल है।
कोई समझ ना पाए क्या रोग सताए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए। ना जाने कहाँ दिल खो गया, ना जाने कहाँ दिल खो गया, ना जाने कहाँ दिल खो गया, ना जाने कहाँ दिल खो गया। मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए। ना जाने कहाँ दिल खो गया, ना जाने कहाँ दिल खो गया। सजदे में यूं ही झुकता हूँ, तुम पे ही आके रुकता हूँ, क्या ये सबको होता है? हमको क्या लेना है सबसे, तुमसे ही सब बातें अब से, बन गए हो तुम मेरी दुआ। सजदे में यूं ही झुकता हूँ, तुम पे ही आके रुकता हूँ, क्या ये सबको होता है? हमको क्या लेना है सबसे, तुमसे ही सब बातें अब से, बन गए हो तुम मेरे खुदा जाने के मैं फिदा हूँ, खुदा जाने मैं मिट गया, खुदा जाने क्यों हुआ है कि बन गए हो तुम हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ, तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में आया हूँ। हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ, तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में आया हूँ। ये जाले करके जा मेरी, तुम्हें जीने में आया हूँ, मैं तुमसे इश्क करने की इजाजत रब से लाया हूँ। माना हम यहाँ हैं, दिल मगर वहाँ है, बड़ी दूर हमसे हम सफर मेरा है, बन के हवा भी जाऊँ मैं, लेकिन नहीं जानती उसके दिल में है क्या। कुछ बातें हैं कहनी उनसे, चाह के भी नहीं कह पाते हैं, जो मेरे दिल में है उसके है या नहीं, सोच कर हर दफा घबराते हैं। कुछ बातें हैं कहनी उनसे, चाह के भी नहीं कह पाते हैं। सात भेड़ों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा रब ने प्रीत का दामन, है नई रस्में नई कसमें नई उलझन, होठ है खामोश लेकिन कह रही धड़कन। तेरे नाम के हर फटी तस्वीर को सांसों के गले का हार किया, दुनिया भूली और सिर्फ तुझे, हाँ सिर्फ तुझे ही प्यार किया। तुम जीत गए हम हारे, हो तुम जीत गए हम हारे और तुम जीते
देखा तेनू पहली पहली बार वे होने लगा दिल बेकरार वे रब्बा मैनू की हो गया दिल जानिए हाय मैनू की हो गया सुन के तेरी बातें सोने यार वे नहीं मैनू तेरे नाल प्यार वे हाय मैं मर जावा दिल जानिए हाय मैं मर जावा सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा आसमां ये हम क्यों पिघलने लगा मैं ठहरी रही ज़मीं चलने लगी धड़का ये दिल सांस थमने लगी हाँ क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है This week is officially over. For truth. Once is Wednesday, we don't focus on Z. Yeah. Oh my god. Tomorrow is Z. I I feel like Z is happening more often than it should. Should. I got up this morning, I was smiling. Because tomorrow is the I know. time is really, 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 I really, was really reading an flying. article recently that says that the Earth is orbiting the sun even faster now, so we have shorter days. I'm glad. I mean, I'm happy it's getting close to my birthday, but that's about it. Talk to the people. Let me just take this call. It's urgent. Yes, guys, it's a wonderful day. It is actually 10 hours 25. And you know, of course, I've got to share with you your daily tips. And so for this morning, I'm going to share with you a tip from Marcus, or a quote from Marcus Aurelius. Many of you know that he is one of my favorite founding fathers of Stoicism, the philosophy which I closely but not so closely follow, in that I know the principles, I follow them, but it's not directly in line with Stoicism. I mean, you can never have a person that fully follows Stoicism. They try as best as they could. I'm back. But Buddy Pal, Yes, buddy pal. I'm going to share a quote this morning. Go ahead. And it's from Marcus Aurelius. And he says, and I quote, "Whenever you are about to find fault with someone, ask yourself the following question. What fault of mine most nearly resembles the one I am about to criticize?" End of quote. So before you find a fault in someone, Could you do it again slowly? I love that quote. Marcus Aurelius says, and I quote, Uh-huh. "Before you are about to find fault with someone, ask yourself the following question. What fault of mine most nearly resembles the one I'm about to criticize?" End of quote. And if the answer is none, you can go ahead and criticize. The answer? Yeah. Trust me. The answer is never none. If I'm about to criticize something on you, but it's not the same fault I have, then I can go ahead and criticize because it's not the same thing. Guys, don't take me seriously. Yeah. You know, half of the time we criticize people, and when we look at ourselves, we are doing, The exact if same not thing. exact, Close to. similar. But you know what? In a way, I agree and disagree with that. Me And too, maybe me too. our listeners can maybe share their views this It's morning. like me trying to criticize you that you eat too much, and I don't eat too much. So, you know, I can criticize you that you eat too much. I don't eat too much. Yeah, but maybe there's some other part of you that stinks. Some other attitude that you have that's, terrible. Okay. Well, yeah. So I was about to say, now I forgot what I was about to say because you interrupted me. That's life. That's life. I was about to say, what did you say just now? What did you say? About eating? No, what were we talking before that? It goes to say, you're going to say it goes to say, and then you stop. So that's why We were ju- saying something before. I jumped in. You want me to rewind the tape? Yes.
It's 10:28. While you remember, shop now, Tangnably, to check out our friends over there at Venus Footwear. They're located at 110 Regent Street, Lazytown, Georgetown. At Venus Footwear, they cater for every occasion, whether it's to work, school, or even at casual outing. So check them out today at 110 Regent Street. Oh, what I was about to say was that sometimes we're saying that, you criticize people, right? And you don't see that you got the same thing. But sometimes we know what our flaws are, But we don't want right? to fix it. No, but sometimes somebody got to tell us before we can actually put it to action to work on that. So sometimes it's maybe not such a bad thing criticizing people, because sometimes that's the push that they need. Like I would say, what are you maga? Maybe that's a push that you need to start eating more. What are you fat? That's the push you need to start exercising, to start working out, because that's when you'll realize that people are actually observant and it's really out there, right? What am I rum you a drink? That's when you're going to realize, I really got to tone down because I'm really drinking too much. What o'clock your party? That's when you're going to start coming home a bit earlier or start partying less, right? So maybe criticisms are not such a bad thing all the time. Right? So that's what, so even though you and I may have the same problem, we may have the same flaws, we may have the same fault, maybe I need to call out you and you need to call me out. I agree with you, buddy pal. Right? So it's not such a bad thing. And you can't always be constructive in your criticism, because sometimes you gotta just be nasty about it. I'm not saying that you gotta go causing anybody. Don't get me wrong. All I'm saying is that sometimes even when you're constructive to people, they don't really get the point, because you're kind of like you're sugarcoating it. So you just need to get to the point. All right? I love that. And thanks for coming to my TED Talk. Number 2. Let's continue for This for is today. second for the day. Second one Y'all for the didn't day. pay me for this much. Y'all did not pay me for 2 TED Talks in one day. All right? Let's continue with the music, guys. All right, 30 minutes after 10 o'clock. We come back and wrap things up in just a bit. नशा पहला खुमार नया प्यार है नया इंतजार कर लूं मैं क्या अपना हाल ऐ दिले बेकरार मेरे दिले बेकरार तू ही बता पहला नशा पहला खुमार थे यही
दोनों क्या मिल गई तुमको खुशी हो के जुदा ये तो बोलो प्यार था वक्त नहीं जो बीत गया दो पल में तू बन के याद रहे फरियाद रहेगा दिल में तू हमको भूल गया बस यार हम पागल थे सोचा तुम्हें जो रात दिन जो तू ना मिला मुझे जो तू ना मिला मुझे दिल को क्या बताऊंगा क्या बताऊंगा जो तू ना मिला मुझे दिल को क्या बताऊंगा दिल को क्या बताऊंगा ना जिया जिंदगी एक पल भी तुझसे होके जुदा सुन जरा बिन तेरे मुझसे नाराज था दिल तू मिला है तो है कह रहा मैं तो तेरे रंग में रंग चुका हूँ बस तेरा बन चुका हूँ मेरा मुझ में कुछ नहीं सब तेरा मैं तो तेरे ढंग में ढल चुकी हूँ बस तेरी बन चुकी हूँ मेरा मुझ में कुछ नहीं सब तेरा सब तेरा सब तेरा सब तेरा फिर दिल के रास्तों पे तेरी आहट जो हुई हर धड़कन जश्न में है ये नात जो हुई फिर दिल के रास्तों पे तेरी आहट जो हुई हर धड़कन जश्न में है ये नात जो हुई करे बागबानी माली ओए ले गया फूल मुर्शिद कोए करे बागबानी माली ओए ले गया फूल मुर्शिद कोए उंगली विच छल्ला इंज पाके क्यों प्रीत पराई होए मिट्टी वर्गी गुड़ियां साडी सोनी वर्गा दूल्हा कदे खेली साडे बेड़े हुण वेखे चोखा चूल्हा जग सारा मिट्टी गारा जग सारा मिट्टी गारा हरफ हरफ इश्क दा ऐ खुदा खैर मंग दे लख दे वदाइयां खैर मंग दे लख दे वदाइयां खैर मंग दे मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है सदा रहना दिल में परी
जमाने में जब वफा निकला, मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला, मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला। मुकम्मल हो गई थी जिंदगी, दस्तकें खुशियों ने दी थी, मिट गई थी हर कमी, क्यों बेवजह दिए सजा, क्यों ख्वाब देके वो ले गया, जिए जो हम लगे सितम, अज़ाब ऐसे वो दे गया, मैं ढूंढने को उसके दिल में जो खुदा निकला, मैं ढूंढने को उसके दिल में जो खुदा निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला, मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला। इस तरह से तुम जैसे कोई हो ख्वाब नया, बस यादें रह गई देखो, अब मैं तुम में जो था ना रहा, हाँ पूछता हूँ मैं खुद से, दूर क्यों रहा तुझसे, जाते जाते सुन ले तू जरा, लबों पे नाम है तेरा, दिल में याद है तेरी, तू मेरा ना हुआ तो क्या, तो फिर भी जान है मेरी, लबों पे नाम है तेरा, दिल में याद है तेरी, तू मेरा ना हुआ तो क्या, तो फिर भी जान है मेरी। तुझको अपना कभी कहने से पहले सोचा नहीं, ख्वाब में भी तेरा दिल तोड़ पाया नहीं, मैंने ये जिंदगी तेरे ही नाम लिख दी मेरी, किस्मतों से तुझे पर जोड़ पाया नहीं, वो, 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 वो। तेरे सामने आ जाने से ये दिल मेरा धड़का है, ये गलती नहीं है तेरी, कसूर नजर का है, तेरे सामने आ जाने से ये दिल मेरा धड़का है, ये गलती नहीं है तेरी, कसूर नजर का है, जिस बात का तुझको डर है वो करके दिखा दूंगा, ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा,
तुमको मैं चुरा लूंगा तुमसे, दिल में छुपा लूंगा। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा। तुमको मैं चुरा लूंगा तुमसे, दिल में छुपा लूंगा। तुमसे ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी। चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे शैया तेरी। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। मेरी तेरे तो कहंदी अज दिल वारा वे, डाली ते टकाई फिर दी। रखे नी तू महंगे महंगे शौक नी, हुई ना पराडा सोनिए, दिल साडा कुछ तो भी टॉप नी। हाँ नी फिर दिया जाने बारी दे, ये गब्बरू है तेरे हान दे। हाँ हो लगदा नी मैनू जाने दे, मुंडे तेरे टाउन दे। हो मेरे दिल नू बेकाबू जिया कर गई है तू। किथों आईए 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 तू, नी अज मुंडे नू बेकाबू जिया कर गई है तू। किथों आईए 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 तू। हार गया जिंद ते तो सजना है चिरदे, नजरा मिलाई जावे दिल ही नहीं मिलदे। हार गया जिंद ते तो सजना है चिरदे, ओ नजरा मिलाई जावे दिल ही नहीं मिलदे। नक वाला कोका जान कट ले गया, नक वाला कोका जान कट ले गया। जवानी तेरे पैर वाली चाचर दे नाल, ओ दस किवें किथे कदों केड़ी थां, जिंद मित्तरां दे करेंगी तू ना। किवें किथे कदों केड़ी थां, मित्तरां नू करेंगी तू हाँ। की सुनावा तेरे बारे, नी अज हो गया मरीद मुंडा तेरे सोने रंग दा। कट्टी कुड़ियां दी जिंदे होने पर तेरे मूरे संग दा। My top dog has been violated. I'm very violated. I'd like to file a claim. To NIS? Yeah, to NIS, to the HR department. Let me tell you something off the mic. Yes.
I've been ambushed. This is me sending out the hand signal. I need help. What do you want to say to the people? It's already 15 minutes Hey, after 10 o'clock. What do you want to guys, say to the people? 15 minutes after 10 o'clock. 50 minutes. Oh, guys, thank you so much for joining us. We hope that you had another lovely day here. It wasn't our usual upbeat Wednesday. We played more of the slower side, soother side of music for you today. Yes. Because I feel like this week has not been so upbeat for me. What about you, buddy pal? Yeah, it has not been. It has been a rough week thus far. You know, since Select Alex was away on vacation, you know, like I feel like we were missing our third, component here in the office and in the studio. Yeah. Yeah, but anyway, he's made up for that this morning. He has. He has, yes. Now that he's back, we're back to regular programming. Tomorrow is Zay. Join us for our usual 90s and early 2000s type of music, as well as some newbies we're going to drop for you. And then we've got Friday and then another weekend. Sadly, not a long one, but it's the weekend very soon. All right. All right, guys, take care. Have a good day. Be careful on the roadways. We may have some rain here and there today, so just be careful on the roadways and just be careful in general at all times. Also, COVID. I'm seeing COVID. Some persons are saying that COVID is on the rise once again. We're going to be having large gatherings with the cash grant and these kinds of things. We're kindly encouraging persons to wear their masks and, to stay safe. All right, everybody. Take care, everyone. Take care. Bye-bye. Bye-bye.